हेलो गाइस, आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे और इसके लिए आज 4 घंटा का टाइमर लगा दिया मैंने। जहाँ तक हम लोग 2 घंटे में यहाँ कितना टॉपिक्स है 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? Genes inheritance explains how the characters are passed एस्ट्रो हाई एस्ट्रो, कैसे हो आप? कहाँ से हो? जेनेटिक्स इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स हाउ कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is inheritance and variation. Inheritance plus variation is known as genetics. Degree inheritance explains how characters are passed on from parent to progeny. Inheritance explains how characters are passed
on from parent to progeny. Variation, degree by which progeny differs from their parents. Degree by which progeny differs from their parent. कितना डिफरेंट हुआ, ये वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब है कितना डिफरेंट हुआ, ठीक है, पेरेंट्स से। और इनहेरिटेंस का मतलब कैसे कैरेक्टर्स पास हुए, कैसे कैरेक्टर्स पास हुए पेरेंट्स से प्रोजेनी तक। अब पहला टॉपिक है, कुछ जेनेटिकल टर्म्स हैं जो हमें देखना चाहिए। जेनेटिकल टर्म्स कुछ है। फर्स्ट है जीन्स। They are the units of inheritance which contain the information that is required to express a particular character in an organism. They are the units. They are the units of inheritance which contain the information that is required to express a particular character in an organism. Which contain the information that is required to express a particular character. That is required to express a particular character. What are alleles? Genes which code for a pair of contrasting traits and present on the same locus on the homologous chromosome are known as alleles. They are slightly different forms of the same gene. Homozygous identical pair of alleles, heterozygous dissimilar pair of alleles.
A segment of DNA that codes for a specific trait, a different version or variation of a gene. Number per locus, is present one gene is present at a specific locus on a chromosome. Two alleles, one from each parent, exist on each gene. The gene for eye color. Okay. Difference between gene and allele, that is, a gene is represented as the gene for eye color, the allele for brown eyes or blue eyes. Allele is for brown eyes or black eyes. The alleles, genes which code for a pair of contrasting traits and present on the same locus of homologous. They are the slightly different forms of the same gene. Gene determines eye color. Alleles determine brown or blue. And if a person has BB, they have brown eyes. If a person have small b, they have blue eyes. Imagine you have a recipe book, your DNA, and in that book there is a recipe for making cookies. Okay, recipe book, and there is a chapter 1, that is how to make cookies. Let's consider. Okay, let's consider cookies. Okay, now there can be different version of that cookies recipe. One might use chocolate chips and another might use raisins. There are the two different versions of the recipe, unlike alleles. So cookies can be A can be due to might use chocolate chip, and B is for raisins. These different versions are called alleles. Okay, now let's consider recipe book as DNA, cookies consider as gene, and this gene how will appear, how will express, it will decide by chocolate chips. These are alleles. Okay, the alleles are different flavors of that trait. So gene is like a recipe of a trait, example eye color, and alleles are the different flavors of that trait. Okay, so allele क्या होता है, जैसे कि आपका एक रेसिपी बुक है, उसको आप कंसिडर कीजिए एज अ डीएनए। डीएनए कंसिडर करने के बाद उसमें चैप्टर 1 है हाउ टू मेक कुकीज़। तो जो कुकीज़ है वो कुकीज़ आपको जीन कंसिडर करना है, ठीक है। कुकीज़ भी दो तरह के फ्लेवर में आते हैं, एक चॉकलेट एक रेजिन्स। तो चॉकलेट और रेसिन्स जो है वो अलग अलग टेस्ट देगा, लेकिन वो जो जीन है वो कुकीज़ ही बनाएगा। तो रेसिन्स और चॉकलेट एलिल्स हो गए। कुकी कैसा खाने में दिखेगा या कैसा खाने में मुझे मिलेगा,
प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। तो कुकी कैसे खाने में दिखेगा या कैसे खाने में लगेगा वो हमारा एलील डिसाइड करेगा। तो जीन हुआ कुकी और एलील हुआ उसका, वो कैसा अपीयर होगा या कैसा दिखेगा कैसा लगेगा। सपोज जीन एक आई कलर का है, तो वो जो जीन है वो डिसाइड करेगा कि आई कलर होगा, आई कलर में यूज होगा वो जीन। वो जीन कैसा दिखेगा, वो ब्राउन दिखेगा वो आई कलर या ब्लैक दिखेगा वो एलील डिसाइड करेगा। ठीक है। The gene which codes for a pair of contrasting traits and present on a same locus on the homologous chromosome are known as alleles. They are slightly different forms of the same gene. Okay, different forms of the same gene. Homozygous identical pair of alleles TT or small t. Another example I want to give, that a gene, think a gene as a school uniform. Okay, every student in the school must wear a uniform, but there can be different colors of uniform. The alleles are like the different colors of the uniform. Some students wear blue and some students wear green. Okay, so the gene decides the students must wear a uniform. So जो जीन डिसाइड करता है क्या, वो स्टूडेंट को पहनना ही पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। तो एक बच्चे को जन्म लेने के लिए जीन लाना ही पड़ेगा। लेकिन the alleles decide what color the uniform will be. एलील डिसाइड करेगा कि वो यूनिफॉर्म कैसा दिखेगा, मतलब वो जीन कैसा दिखेगा। सिमिलरली जीन डिसाइड्स अ ट्रेट लाइक हेयर। एक जीन डिसाइड किया, मतलब एक जीन थोपा गया कि आपको हेयर कलर कराना है, हेयर आपको हेयर के लिए ये जीन चाहिए, ये जीन इंक्लूड हो गया। अब ये जीन कैसा दिखेगा, मतलब हेयर कैसा दिखेगा, वो एलील्स डिसाइड करेगा। कर्ली होगा हेयर या स्ट्रेट होगा। होमोजाइगस pure identical pairs of alleles. Okay, identical pairs of alleles. होमोजाइगस प्योर का मतलब है अगर एक इंडिविजुअल में दो आइडेंटिकल एलील्स है, जैसे दो एलील ही सेम है, होमोजाइगस बोथ एलील्स आर डिफरेंट। सो हेटेरोजाइगस में क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों एलील ही रिसेसिव है, मीन्स स्मॉल ए पकड़ लीजिए। होमोजाइगस में दोनों एलील ही डोमिनेंट है। होमोजाइगस डोमिनेंट में दोनों एलील ही डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस रिसेसिव में दोनों एलील ही रिसेसिव होगा। ठीक है। चलिए अब होमोजाइगस को हम डिटेल में समझते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक टू गेटिंग अ मैचिंग सॉक्स। ओके, अगर बोथ सॉक्स वाइट है, ठीक है, दोनों सॉक्स है मेरे पास और दोनों सॉक्स ही वाइट कलर का है, तो वो दोनों सॉक्स क्या होगा, ए। अगर दोनों सॉक्स ब्लैक है सपोज कीजिए, तो वो दोनों को मैं रिसेसिव कंसिडर कर रहा हूँ। सिंस बोथ आर द सेम, तो
एक बंदे में अगर दोनों सॉक्स ही वाइट वाइट पहन लिया, जिसको मैं होमोजाइगस डोमिनेंट मान रहा हूँ, वो हुआ होमोजाइगस प्योर डोमिनेंट। और अगर एक बंदे में होमोजाइगस रिसेसिव आ गया, मतलब ब्लैक कलर, तो वो हो गया आपका स्मॉल है, तो होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस प्योर जस्ट मीन्स बोथ जीन्स आर सेम, तो दोनों जो जीन आया वो सेम एलील है, मतलब वो दोनों जीन सेम टाइप के दिखते हैं। होमोजाइगस एलील प्योर का मतलब एक बंदे बना, जो बंदे में दोनों जीन आए, वो जीन का जो एलील्स है वो दोनों एलील ही सेम है। ठीक है। Heterozygous hybrid dissimilar pair of alleles. Okay, what is heterozygous allele? अब heterozygous हम लोग पढ़ेंगे। heterozygous hybrid का मतलब क्या होता है? Meaning of two different variation versions of allele of a gene, one dominant and one recessive. अगर आपके एक बंदे में अगर एक आया वाइट सॉक्स और एक पहना है ब्लैक सॉक्स, तो उसका जो हुआ वो हो गया ए बी के स्मॉल है, तो वो दोनों का जो जीन है, मतलब वो बंदे में जो जीन है वो एक जीन अलग एलील का है और दूसरा जीन अलग एलील का है। एक जीन डोमिनेंट एलील का है, एक जीन रिसेसिव एलील का है। तो ये हो गया heterozygous hybrid. Since the dominant allele is stronger, it decides the trait. ठीक है। अब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो वाइट सॉक्स है और बंदे में अब जो ब्लैक सॉक्स है, दोनों पहना है, लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए कि फाइनल जब वो तैयार होगा तो वो दिखेगा कैसे, कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि स्कूल में मैंडेटरी है किसी एक को दिखना। ठीक है। तो जो डोमिनेंट है वही शो करेगा जब टीचर देखेंगे। तो वो जब टीचर को देखेगा तो वो दोनों सॉक्स उसका पैर में वाइट वाइट ही नज़र आएगा, लेकिन अंदर में वो असली में एक वाइट है एक ब्लैक है, जो जबकि ब्लैक जो रिसेसिव है वो छुप गया, वो दुनिया को नहीं दिख रहा है, और वाइट सॉक्स दिख रहा है टीचर को। तो वो समझ लीजिए कि ये ठीक सा बंदा पहन के आया है। अगर आप यही वेलम है, तो बंदे में ब्लैक सॉक्स है पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्कूल में नियम है कि दिखना एक ही चाहिए, आप जो भी पहनो तो डोमिनेंट शो कर देगा। ठीक है। तो ये हेटेरोजाइगस हाइब्रिड, ये थोड़ा डिटेल में मैं सिंपल में समझाया। तो मैं पहले फिर से होमोजाइगस से समझाता हूँ आपको। होमोजाइगस क्या है? अगर एक बंदे बंदे को आप, ये एक बंदा है, तो उसमें जो जीन है उसको आप एक वाइट सॉक्स लीजिए जो कि डोमिनेंट है, एक ब्लैक सॉक्स है जो कि रिसेसिव है। तो अगर वो बंदे में जो दोनों जीन आया, मतलब स्कूल के यूनिफॉर्म में सॉक्स का दिखना है, तो दोनों जो जीन आया वो अगर दोनों जीन वाइट है, मतलब दोनों वाइट सॉक्स आ गया, तो बंदे को दिखेगा कि वाइट सॉक्स पहना है। ठीक है। अगर एक बंदे में आ गया एक वाइट सॉक्स और एक ब्लैक सॉक्स, फिर भी जब वो स्कूल में जाएगा, वो जाते जाते जो टीचर को दुनिया को दिखेगा वो वाइट ही दिखेगा, क्योंकि डोमिनेंट ने रिसेसिव को छुपा दिया। लेकिन बंदे में प्योर जो एलील है, डिफरेंट एक एलील है, वो रह गया। ठीक है। वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को दिखेगा वाइट, बिकॉज द वाइट सॉक्स इज डोमिनेंट। ओके, दिस इज द ओवरऑल थिंग। फिनोटाइप। ठीक है। फिनोटाइप, अच्छा सिंपल शब्दों में अगर होमोजाइगस का डेफिनेशन लिखना है वो, तो आइडेंटिकल पेयर ऑफ एलील्स लिखिएगा। आइडेंटिकल पेयर ऑफ एलील्स। अगर सिंपल शब्दों में हेटेरोजाइगस को बोले तो डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील्स। ठीक है। डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील्स, यही है।
phenotype, external and morphological appearance of character. phenotype, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जो एक्सटर्नल बाहरी लुक जो है वो दिखता जो है, तो वो इफ अ पर्सन हैज ब्राउन आईज देयर phenotype is brown, yes. If a plant is tall, its phenotype is tall. Even if someone has hidden gene for blue eyes but brown eyes, because it's dominant, the phenotype is still brown, because we can see phenotype, the visible trait जो हमें दिखता है। तो जो बंदा दो, एक सॉक्स वाइट है और एक ब्लैक सॉक्स है, फिर भी हमें दिख रहा है वो पहना है वाइट सॉक्स, क्योंकि वाइट सॉक्स डोमिनेंट है। लेकिन वो जो उसका जो दो जीन है, मतलब दो एलील है, वो डिफरेंट है वो जीन में, तो वो हमें ब्लैक नहीं दिख रहा है। तो जो फेनोटाइप कैरेक्टर मैं अगर बोलूँ, तो वो बंदे का सॉक वाइट है, ये फेनोटाइप कैरेक्टर है। मतलब एक्सटर्नल और मॉर्फल, सपोज करिए अगर एक बंदे का आँख ब्राउन आइज है और हमें दिखता है ब्राउन आई, वो बंदा ब्राउन आई है, लेकिन उसका जो आई का जीन है उसमें कहीं ना कहीं ब्लू भी है, पर हमें दिख रहा है ब्राउन, क्योंकि ब्राउन कलर डोमिनेंट है। तो इसलिए फेनोटाइप कैरेक्टर उस बंदे का हो गया ब्राउन, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ब्लू हो सकता है, क्योंकि ब्लू इसलिए बाहर नहीं आया क्योंकि वो छुप गया रिसेसिव होने के लिए। जेनोटाइप, व्हाट इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनाइजिंग। ओके, जेनोटाइप, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, वो है जेनोटाइप, दैट आर इनसाइड, ठीक है। इफ समवन हैज बोथ डोमिनेंट जीन्स फॉर ब्राउन आइज, देन जेनोटाइप इज बी, बिग बी, बिग बी। अगर समझिए एक बंदे का जो आइज है वो ब्राउन है, ठीक है, तो जब जेनेटिक मेकअप उसका देखा गया, तो दो जो एलील है, दोनों जो एलील है वो डोमिनेंट जीन्स, ठीक है, दोनों ही सेम है एलील, मतलब डिसाइड किया जीन कैसा दिखेगा, तो दोनों ही सेम ब्राउन का है जीन। अगर किसी बंदे का एक आई ब्राउन है और एक ब्लू है, ठीक है, तो उसका जेनेटिक मेकअप हो गया बिग बी स्मॉल बी। अगर किसी बंदे का आई ब्लू है, तो उसका दोनों जीन कैसा होना चाहिए, ब्लू ब्लू, बिकॉज इट्स रिसेसिव, ओके। सो दोनों सेम ही है, मतलब दोनों अगर जीन सेम ही है ब्लू कलर, तो उसका जेनेटिक मेकअप स्मॉल बी। अगर दोनों डोमिनेंट जीन का है ब्राउन आइज, तो दोनों का जेनेटिक मेकअप बी बी। अगर बंदे का आइज फेनोटाइप कैरेक्टर में हम लोग ब्राउन लिख रहे हैं, लेकिन जब हम अंदर से देख रहे हैं तो उसका जीन से ही तैयार है, ब्लू छुप गया है, तो उसका जेनेटिक मेकअप हो गया बिग बी स्मॉल बी, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। द जीन इनसाइड वॉट एवर वी सी देम और नॉट, वेदर वी सी देम और नॉट, ठीक है। अब पुन्निट स्क्वायर के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है, फिर हम लोग चलेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Punnett square. It is a simple diagram used to predict how how the traits are inherited from parents to offspring, ठीक है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रेट्स आए, ये एक डायग्राम है जो कि पुन्निट साइंटिस्ट ने दिया था। चलिए, it is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. Let's say, चलिए, B B इक्वल्स टू बिग बी क्या होता है, ब्राउन आइज। ब्राउन आइज होता है डोमिनेंट, स्मॉल बी होता है ब्लू आइज, जो कि होता है रिसेसिव। इफ वन पेरेंट if one parent
उनका जेनेटिक मेकअप कुछ ऐसा है, बिग बी स्मॉल बी, ब्राउन आइज बट कैरीज ब्लू, इसको वैसे बोलते हैं ब्राउन आइज बट कैरीज ब्लू, and the other parent has also big B small b, we can use a Punnett square to possible children traits. तो हम पुन्निट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द पॉसिबल चिल्ड्रन ट्रेट्स। कैसा दिखेगा वो उसका बच्चा। तो दोनों में क्या है, एक जीन हम पेरेंट ए का लेते हैं, दूसरा उसका लिखते हैं ऐसा करके नीचे, एक जीन मम्मी का एक जीन ऐसा। तो बी से क्रॉस होकर बिग बी से स्मॉल बी क्रॉस होकर बी, ठीक है। ये भी ब्राउन कलर दिखेगा, ये भी ब्राउन कलर दिखेगा, ठीक है। फिर से बी 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 बी, लेकिन रेशियो है उनका लड़का और लड़की होने का, मतलब ब्लू आइज होने का 3:1। मगर अब अगर 4 बंदे पैदा होगा ओन माँ बाप का, जिसके अंदर एक डोमिनेंट ब्राउन आई और एक रिसेसिव ब्लू, डोमिनेंट ब्राउन जीन और डोमिनेंट रिसेसिव ब्लू आई है, दोनों पेरेंट का अगर ऐसा है, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा 3:1, मतलब 1% चांस ये है कि जो बंदा पैदा हो वो ब्लू आइज का हो। लेकिन बाकी अगर 3 रेशियो अगर ज़्यादातर देखा जाए तो ब्राउन आइज ही पैदा होंगे। लेकिन एक बार जो बंदा पैदा होगा हो सकता है उसका आई ब्लू कलर का हो, ठीक है। 75% चांस ऑफ ब्राउन आइज ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, 75% चांस of their offspring should be brown eyes, 25% chance of blue eyes. So Punnett square helps predict how genes mixed and what traits children might have. Let me, okay, so ये है पूरा कंसेप्ट पुन्निट स्क्वायर का। तो ये था जेनेटिकल टर्म्स। जीन्स क्या होता है, जीन्स फैक्टर्स होता है, दे आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस which contain the information that is required to express a particular character in an organism. Alleles क्या होता है, gene which code for a pair of contrasting traits and present on a same locus on the homologous chromosome are known as alleles. They are slightly different forms of the same genes. Okay, so जीन क्या होता है, जीन होता है स्पेसिफिक लोकस ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। एलिल्स डिसाइड करता है जीन कैसा दिखेगा, ठीक है। जैसे आप समझिए एक रेसिपी बुक है, उसको डीएनए समझिए, कुकीज़ उसका फर्स्ट चैप्टर है, कुकीज़ बनाने का, वो कुकीज़ को समझिए एक जीन जब उसको समझे, वो जीन दिखेगा कैसे ये डिसाइड करेगा वो कुकीज़ में कौन आ रहा है, चॉकलेट मिल्क आ रहा है या रेजिन्स आ रहा है। तो कुकीज़ हो गया जीन, और जो चॉकलेट फ्लेवर देगा उस जीन को वो हो गया एलिल्स, ठीक है। होमोजाइगस में अगर 2 जीन सिमिलर एलिल्स के बने हैं, 2 जीन, तो वो होमोजाइगस, ठीक है। हेटेरोजाइगस में डिफरेंट डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन। फेनोटाइप हो गया एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल में दिखेगा कैसे, भले ही उसके अंदर रिसेसिव जीन हो पर वो एक्सटर्नल में दिखेगा कैसे ये डिसाइड करता है मतलब ये फेनोटाइप बोलते हैं। और जेनेटिक मेकअप वो असली में कैसा बना है
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जेनेटिक मेकअप का यूज़ करते हैं। अब नया टॉपिक, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इससे पहले 10 मिनट का ब्रेक। 35 बज रहा है, अभी 45 में आ जाऊँगा, 40 में।
ओके गाइस, 20 मिनट हो गया, 20 से 30 मिनट। तो अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेंडल्स law of inheritance. Experiments performed by Mendel on genetics and description of mechanism of heredity, process and formulation of principles are known as Mendelism. ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने परफॉर्म किया था जेनेटिक्स के बारे में, जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया था हेरिडिटी के बारे में और फॉर्मूलेशन जो दिया था, उसी को बोलते हैं मेंडलिज्म। He conducted hybridization experiments on garden pea, Pisum sativum, for 7 years, that is 1856 to 1863, and proposed law of inheritance. Propose किया law of inheritance. Mendel conducted artificial pollination or cross pollination experiments using several true breeding pea lines. मेंडल जो थे वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट किए थे यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। द ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन is that have undergone self pollination and for several generations. Mendel selected 14 breeding peas varieties pairs which were similar except for one character contrasting traits. तो ग्रेगोर मेंडल थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, conducted hybridization experiments on garden pea plant Pisum sativum from 1856 to 1863. His experiments led to the formulation of laws of inheritance. इनहेरिटेंस के लॉज आया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, His experiments led to the formulation of laws of inheritance which explain how traits are passed from parents to offspring. Parents से offspring में कैसे traits गया, ये उन्होंने बताया था। A true bleeding line is one that undergoes continuous self-pollination for several generations and produces offspring with the same trait. ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन कई जनरेशन तक गया और प्रोड्यूस किया जो ऑफ स्प्रिंग वो सेम गुण के साथ ट्रेट्स के साथ निकला। मेंडल जो था वो सिलेक्ट किया 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, ईच हैविंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। स्टेम हाइट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या क्या चूज किया, टॉल डार्क। फ्लावर कलर वायलेट वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। पॉड शेप्ड इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन और येलो। सीड शेप राउंड एंड विंकल्ड। सीड कलर येलो एंड ग्रीन। रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस, large sample size. Large sample size. He conducted experiments on a large number of pea plants, making his results statistically reliable.
Focus on one character at a time. Instead of studying multiple traits together, he observed one trait per experiment, making patterns easier to understand. उन्होंने मल्टीपल ट्रेट्स पर एक साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक एक चूज किया और एक एक ट्रेट को स्टडी किया. जैसे उन्होंने स्टेम हाइट को अगर एक प्लांट में एक पी प्लांट में स्टेम हाइट का उन्होंने स्टडी करना था, तो एक स्टेम हाइट टॉल और एक डार्क दोनों को मिक्सिंग किया एक प्लांट बनाने के लिए. फिर आया फ्लावर कलर, वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, pod shaped round, inflated constricted, seed pod color green yellow, seed shape round wrinkled, seed color yellow green. Genes were located on different chromosomes. The pre-plant genes are located which help the independent inheritance of traits. His findings were consistent across several generations of test plant. तो ये जो टेस्ट प्लांट लिए थे वो कंसिस्टेंट रखे थे सेवरल जनरेशन तक. ठीक है. मेंडल्स के लॉ जो अब निकले, he concentrated only one character at a time. He used statistical analysis and mathematical logic for analyzing the result. The characters selected by Mendel were present on different chromosomes. His inferences are confirmed from experiment on successive generation of his test plant. Successive generation तक किए. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. तो पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा. जिन हम लोग शुरू में पढ़े थे जेनेटिक्स, उसमें जो था इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. वेरिएशन जो था, डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. और जीन्स जो था, फैक्टर्स, दे आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू express a particular character in an organism. Alleles, genes which code for a pair of contrasting traits and present on same locus on the homologous chromosome are known as alleles. They are slightly different forms of the same gene. Slightly different forms of the same gene. Homologous pure identical pair of alleles, TT or big TT, small tt. Heterozygous dissimilar pair of alleles, T, big T, small t. Phenotype character, external and morphological appearance of character. Genotype, genetic makeup of an organism. Punnett square, it is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. फिर आया Mendel's law of inheritance. Experiments performed by Mendel on genetics and description of mechanism of heredity process and formulation of principle are known as Mendelism. He conducted hybridization experiments on garden pea, Pisum sativum, for 7 years, 1856 to 1863, and proposed the law of inheritance. Mendel conducted artificial pollination or cross-pollination experiments using several true breeding pea lines. A true breeding pea line is one that having undergone continuous self-pollination for several generations. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. Stem height, tall, dark, flower color, violet white, flower position, axial terminal, pod shape, inflated, constricted, pod color, green yellow, seed shape, round wrinkle, seed color, yellow green. That's it. Reasons for Mendel's success: his experiments had a large sampling size. These have a greater credibility to the data that he collected. He concentrated only one character at a time. He used statistical analysis and mathematical logic for analyzing the result. The characters selected by Mendel were present on different chromosomes. His interference are confirmed from experiments with successive generation of his test plant.
Hello, Sandeep Chintu, easily transferable. क्या?
Okay, so थर्ड टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. Study of inheritance of one character at a time in an organism is called monohybrid cross. Phenotype of Mendelian ratio is 3:1. Genotype or real ratio is 1:2:1. Inheritance of one gene. Phenotype, study of inheritance of one character at a time. Study of inheritance
of one character at a time is known as monohybrid cross. Okay. मैं कुछ कह सकता हूँ? एक मशीन की गवाही कबूल नहीं की जा सकती। मैं गवाह नहीं, सबूत हूँ। कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है। ऐसा According to Section 3 of Evidence Act 1872, an evidence can be material or documentary. You may proceed. पहले तो मैं एक मुद्दे पर रोशनी डालना चाहूंगा योर ऑनर। जब मशीन की गलती से किसी की मौत होती है तो वो हत्या नहीं, हादसा है। दूसरी बात, जो हादसे हुए उनकी वजह वसीकरण नहीं, प्रोफेसर बोरा था। ये नई कहानी है योर ऑनर। प्रोफेसर बोरा मर चुके हैं। ये केस का रुख बदलने की कोशिश है। मेरे पास सबूत है योर ऑनर। ये रेड चिप कौन सी है? चिट्ठी के लिए एडिशनल प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। वसीकरण ने इसे 100 मनुष्यों की रचनात्मक शक्ति दी। मैं इसे 100 मनुष्यों की विनाशकारी शक्तियां दे रहा हूँ। वैसे मेरे बदनामी वसीकरण की। जितने भी सबूत मिले हैं बड़े अहम हैं। इन सबूतों के बिना पर वसीकरण को बेकसूर करार देते हुए ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। ये रोबो अपनी असीमित बुद्धि और शक्ति के कारण मानव जाति का दुश्मन बन सकता है और इसका गलत इस्तेमाल किए जाने के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस जैसा एडवांस रोबो भविष्य में शायद उपयोगी साबित हो, लेकिन आज के जीवन में इस रोबो की जरूरत नहीं है। इसलिए ये अदालत इस रोबो पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाती है। ये अदालत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में इसके सभी कलपुर्जों को अलग अलग करके अदालत को सूचित करने का आदेश देती है। इसमें क्लिक कर दीजिए। You need any help, doctor? This material sensitivity. Sure, doctor. Sure. Lovely. तुमने कहा था ना एक खास चीज है जो मेरे पास नहीं है। देखा उसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स हो।
feelings. लता दीदी, मुन्ना कैसा है? तुम्हारा ही नाम दे रही छुट्टी। अम्मा ने दिया था। खूब पढ़ाना इसे। रोबोटिक्स, फ्यूचर में बहुत स्कोप है। प्रोफेसर बोला, आपने जैसा मुझ में रेड चिप लगाया था, वैसे ही सारे इंसान अपने दिलों में झूठ, ईर्ष्या, धोखा, मंगाई के ढेर सारे रेड चिप्स लगाए करते हैं। शुक्र है मैं इंसान नहीं, वरना चाहकर भी उन्हें निकाल नहीं पाता। तुम पर बहुत जुल्म किए हैं मैंने। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। हे, अरे तुम सब उदास क्यों हो रहे हो? तुमको एक जोक सुनाता हूँ। कहते हैं प्यार में बड़े बड़ों का स्क्रू ढीला हो जाता है। देखो ना, मेरा भी हो गया। I'm going to miss you, Sana. बॉयफ्रेंड नहीं, एज अ टॉयफ्रेंड। डॉक्टर है, आप मेरे भगवान हैं। मैं आप ही से गद्दारी कर बैठा। नियमों को तोड़ना मेरी भूल थी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं चिट्ठी, नियमों को तोड़ना तो तुमने इंसानों से सीखा। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। Be sure you're not touching anything. Children, तुम लोग जिसे देख रहे हो वो है चिटी, the most advanced android humanoid robot। 20 साल पहले डॉक्टर वसीकरण ने इसे बनाया था और फिर कुछ ही समय बाद उसे डिसमेंटल कर दिया गया। क्यों? मैं सोचने लगा था। Okay, children, come let's go to the next section. কালকে খেলা দেখতে দেখতে একটা ছেলে তার সাহস দেখালো আর তার স্বপ্ন পূরণ করে নিল। এই স্বপ্ন হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন। তোমরা সবাই জানো কালকে কেকেআর ভার্সেস আরসিবি প্রথম আইপিএল ম্যাচ ছিল। খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ করে একটা ছেলে মাঠের মধ্যে দৌড়ে চলে গেল। কোনো কিছু না ভেবে পরে ওর সাথে কি হবে, গার্ডের সাথে কিরকম ব্যবহার করে, কোনো কিছু না ভেবে প্রথমে গিয়ে বিরাট কোহলির পা ধরে শুয়ে পড়লো, তারপর বিরাট কোহলি তাকে জড়িয়ে ধরলো। এই স্বপ্ন হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষের। ছেলেটা সারা জীবন মনে রাখবে তার এই স্বপ্নের কথা। কালকে খেলা आपका बिजनेस भले ही कितना अच्छा हो, किस्मत तो विक्की की jewelry brand Palmonas। এই এটা পুরো ব্র্যান্ড। ये तो श्रद्धा कपूर है। When your friend's wedding reminds you that you're still single, there's a match for that. Stop the play, Chitti. पहले पक्षी को हराओ। विक्रम थापा, ये कैसीनो मेरा है। मैं जानता हूँ। रणवीर सिंह। रणवीर साहब, आपको इस वक्त देखकर कौन कह सकता है कि सिर्फ तुम?
फ्लैट से क्यों निकाल दिया गया? टाइम्स चेंज जॉन। कल तुम नंबर 1 थे, आज ली नंबर 1 है, कल तीसरा कोई होगा। So I had to go for you, but I'm your friend, boss. You are one of my friends, John. ये करोड़ों ऐसे एनिमेटेड पेजेस के वीडियोस में मिलियंस में सुपरस्टार ने नौकरी नहीं किया। Good. हिलता है अच्छा। गंभीर सी लायक हो। कोक के अंदर जैसे बच्चा रात मारता है, ये अभी से ऐसे पैर चला रहा है। ये कंप्लीट हो गया तो बहुत कैड आएगा। Oh, you bad cat! Oh, you bad cat! Rascal cat! Get out of my way. This woman faced instant karma. Get out of my way. हाँ बोलिए सर। ओके, तुम कब पे खड़े हो? तुम्हारे आगे कंपनी के देखो, बस उसे ही खोलना है। सर लेकिन सरोजा तो इंजन में है ना? उसके लिए मत डरो। कंपनी के निकलते ही प्रेशर वाल्व रिलीज हो जाएगा और इंजन थोड़ी दूर जाकर खुद रुक जाएगी। ठीक है सर, अभी करना क्या है? पहले यू क्लाइंब को हटाओ। यू क्लाइंब मतलब? आप पर एक उल्टा सरिया फंसा हुआ है, देखो। करियर को उठाते हैं वैसा ही कुछ ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ओके, जल्दी करो ओके। टाइम नहीं है ओके। ओके, तुम कैसे घुमा रहे हो? आप भाई घुमाओ। अब ये क्लॉकवाइज क्या है? जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं। दाहिने हाथ की तरफ सर। दाहिना राइट साइड की बोल रहे हो, वो करेक्ट है। हाँ वैसे वैसे ही। घुमाओ घुमाओ, जल्दी घुमाओ। जल्दी घुमाओ जल्दी। हाँ जल्दी करो। ऐसे ही, ढीला करो ढीला करो। हाथ करो। पूरा ढीला करो ओके। जल्दी ढीला करो। हाँ ढीला कर दिया सर। हाँ हाँ, अब उस मुंह को ऊपर उठाओ। सर हथकड़ी जैसा ऊपर से। हाँ हाँ, वहाँ हथकड़ी जैसा हुक बना होगा देखो। उसे पकड़ लो उठाओ। और जल्दी करो ओके जल्दी। और टाइम नहीं है। जल्दी ऊपर उठाओ। जल्दी करो जल्दी। जोर लगाओ ओके। जल्दी करो। कम ऑन। क्विक क्विक क्विक। और ट्राई करो ओके। Come on, okay. Come on, okay. Come on, okay. Come on, okay. जोर से खींचो जोर में। जोर से खींचो खींचो। Come on, okay. Come on, okay. Come on, okay. Come on, okay. Come on, come on, come on, come on. Come on, okay. Come on, okay. Come on, okay. तुम कर सकते हो। थोड़ा शांत रहोगे। तुम कर सकते हो, okay? ओके हाँ हाँ। काम करने के लिए थी। अरे सब पीछे जाओ पीछे जाओ। अरे चलो हटो 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 यहाँ से। अरे संभाल के। ओके क्या करो ओके ओके और क्या करो ओके और चलेगा ओके स्टार्ट नहीं है चलो। ओके प्रॉब्लम है कि क्रिएटिव से कोई बेटा तक कर रहे हैं इसलिए वो बात नहीं हो गई। किसी ने स्टिल वर्क है बात ये ओके सर वर्क है रहा है मतलब इस तरह बना होगा। ओके तुम सामने चले जाओ दूसरी साइड से निकलो ओके यहाँ दूसरी तरफ से निकलो। जल्दी करो ओके
circular razors. What's the problem there? My friend, hurry up, please! There's someone on the way. What is the monkey doing? Tell me what's wrong. Law of dominance. Characters are controlled by discrete units called factors. Okay, let's take 10 minutes of rest. After that, 2 hours we will 4 to 5 topics. Inheritance of one gene is a very broad topic. We will finish it.
Okay, let's start. Study of inheritance of one character at a time in an organism is called as monohybrid cross. Law of dominance. Characters are controlled by discrete units called factors. Characters are controlled by discrete units called factors. Characters are controlled by discrete units called factors. Factors occurs in pairs. In a dissimilar pair, factor of one member of pair are dominant and other is recessive. A dominant allele is a wild type or unmodified allele which produce normal enzyme or protein that forms a character. डोमिनेंट जो एलील होता है वो वाइल्ड टाइप अनमॉडिफाइड होता है जो कि एक नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जो कि कैरेक्टर को बनाता है. Hi Dr. Tarun Jadon. तरुण जाडौन बोलिए क्या बोल रहे थे आप. क्या बोला मैंने. तरुण जाडौन क्या बोला मैंने. अच्छा बुरा लगा. बुरा क्यों लगा. बुरा लगने का क्या बात है.
Factors occurs in pair, in dissimilar pair. Uh, Factors of one member of pair dominant, other is recessive. A dominant allele is a wild type or unmodified allele which okay. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि डोमिनेंट एलील जो है वो वाइल्ड एलील होता है, वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है या प्रोटीन उसी का कैरेक्टर रिजेंबल करता है जीन। अ मॉडिफाइड एलील इज अ mutant allele which could be responsible for the production of less effective enzyme or non-functional enzyme or no enzyme at all, thus it will be a recessive allele। तो जो recessive allele है वो लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है और नॉन फंक्शनल एंजाइम उसको कहा जाता है और नो एंजाइम एट ऑल भी कहा जाता है। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स called factors. If factors occurs in pairs of factors, one member of pair dominant, the other recessive. The dominant allele is a wild type or unmodified allele which produce normal enzyme or protein that forms a character. Bus. Or a modified allele is a mutant allele which could be responsible for less effective enzyme, non-functional enzyme or no enzyme at all, thus it will be a recessive allele. Next is law of segregation. Law of segregation. This law is based on the fact that alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors of allele of a pre-segregate from each other such that gametes receive only one of the two factors. Thus, gametes are always pure. So, law of segregation states that the gametes do not blend into each other; they remain in the state. Just show the one of the character during gamete formation. The 3:1 ratio obtained in F2 generation is mainly due to segregation, although there is the rule of dominance also. So यही है law of segregation, law of purity of gametes। अब होता नेक्स्ट है डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ। deviations from Mendel's law. That is, one is incomplete dominance. Incomplete dominance was discovered by Carl Correns 1903 in Mirabilis Jalapa. Incomplete dominance was discovered by Carl Correns. When a cross between two pure breed is done for one contrasting character, the F1 hybrid phenotype do not resemble either of the two parameters was in between the two called incomplete dominance. Example, if a 4 o'clock plant or snapdragon 4 o'clock or a snapdragon plant with red flowers is crossed with a white flowered plant, the offspring have pink flowers because some red pigment is produced in F1 intermediate and colored plant. Neither the red nor the white, the color white color is dominant. Such a situation is known as incomplete or partial
dominance. So F2 generation phenotypic ratio is 1 is to 2 is to 1 instead of 3 is to 1 as Mendelian monohybrid cross. Okay. In genotypic ratio of F2 is 1 is to 2 is to 1. Okay. Genotypic ratio is same. Tay-Sachs disease is an example of the result of incomplete dominance. Okay, Tay-Sachs disease is an example of incomplete dominance. Okay, once again, incomplete dominance was discovered by Carl Correns 1903 in Mirabilis jalapa, where a cross between two pure breed is done for one contrasting character. The F1 hybrid phenotype does not resemble either of the two parents and was in between the two. Okay, the F1 में कोई भी color नहीं आया था, called incomplete dominance. If a 4 o'clock plant or snapdragon plant with red flowers is crossed with white flowered, the offspring have pink flowers because some red pigment is produced in F1 intermediate color plant. Neither the red nor the white color is dominant. Such a situation is known as incomplete or partial dominance. If a red flower or a white flower is crossed in F1 generation, neither the red nor the white color is dominant. Such a situation is known as incomplete dominance. F2 जनरेशन में जो फ्लावर प्रोड्यूस हुआ था उसका फेनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1. ठीक है, F2 जनरेशन फेनोटाइपिक रेशियो. और जो 3:1 एस मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसका थोड़ा नहीं है. जेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 genotypic ratio of F2 generation is 1:2:1 also. Tay-Sachs disease is an example of the result of. Okay. Incomplete dominance is also found in color of flower in snapdragon or anthurium or dog flower and feather color of Andalusian fowls. So you have to remember this. Incomplete dominance in simple terms whether neither parent state is completely dominant over the other. Instead of the offspring show blended or intermediate trait. Okay. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग इफ अ red flower is crossed with white flower, the offspring somehow produced pink color flower. अच्छा, who developed? Carl Correns 1903 in Mirabilis jalapa. Incomplete dominance. Okay, if 4 o'clock plant or a snapdragon plant with red flowers is crossed with a white flower because some red pigment is produced, incomplete or partial. F2 generation phenotypic ratio is 1:2:1 and genotypic ratio 1:2:1. Tay-Sachs disease in an example. Interest is found in color of flower in snapdragon, anthurium or dog flower and feather color in Alsatian fowls. Okay. Incomplete dominance is found in color of flower in snapdragon और एंथ्रियम और डॉग फ्लावर एंड फेदर कलर जो होता है वो एंडुलेशियन फाउल्स में पाया जाता है.
कोडोमिनेंस, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं। रेड, सपोज आर, अच्छा सपोज वी क्रॉस आर फ्लावर वाइट फ्लावर, instead of getting instead of getting only red or white flower, the offspring will produce pink flowers. This happens because neither the red nor the white allele is completely dominant, so they mix to create a new color. Key features of incomplete dominance: no allele is completely dominant, offspring show an intermediate or blended trait. It is different from co-dominance. So law of dominance क्या बोलता था? एक जीन एक सबको डोमिनेट करेगा एक फैक्टर पर, वैसा नहीं हुआ। सपोज दो, एक फ्लावर है रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर, ठीक है, और हम लोग क्या किए, एक आर को लिया, F1 जनरेशन क्रॉस कराया स्मॉल आर से, तो यहाँ पर आर आर जो आया F1 जनरेशन में पिंक आया। अब क्या करेंगे F2 जनरेशन में, आर 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 आर, तो यहाँ पर आएगा रेड, यहाँ पर आएगा क्या पिंक, यहाँ पर आएगा पिंक, और यहाँ पर आएगा वाइट। सो 1 रेड is to 2 pink is to 1 white. Phenotypic and genotypic is same. बस phenotypic and genotypic is same. ताल में किसी भी वायर में होगी तो इससे पहले कि तुम्हारे करंट निकल जाए जान लेते करंट होगी तो इससे पहले कि तुम्हारे करंट निकल जाए जान लेते करंट होता क्या। करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी तार में किसी भी वायर में 1 सेकेंड कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। तुम्हारी करे केड़ी गल ते चलती, अजे भी हवा साडे वल ते बढ़ती, सीने महरियां दे अग बढ़ते 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 गलती। तुम्हारी करे केड़ी गल ते चलती, तुम्हारी करे केड़ी गल ते चलती, अजे भी हवा साडे वल ते बढ़ती, सीने महरियां दे अग बढ़ते 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 गलती।
दिनों आमिर खान को तारे ज़मीं पर आगे शूट करने के बाद पता चला था कि दर्शी सफारी hasn't cried in his life, but ultimately अपना शार्प डायरेक्टर दिमाग लगा के उन्होंने सारे क्राइम सीन्स फिल्म किए. But the one thing he had a big problem with, he couldn't cry when the mother leaves him and goes away. And in there, you see him like really weeping. So when that scene came up, he said, Amar uncle, I don't know the scene. So I said, right, you do all the scenes so well. He said, I don't know how to cry. I've never cried in my life. I was like, whoa. So now we're halfway through the film. And suddenly I discovered this guy doesn't cry. He got really anxious and he said, how do I do the scene? I don't know how to cry. So I said, okay, calm down. I said, don't panic. I don't want you to cry. Can you breathe with me? I said, can you imitate my breathing? He said, yeah, I can. So I started breathing. Regular breaths. And he was breathing. And then I made my breathing irregular. So he started copying me and making his breathing irregular. And I said, now, while you're doing this irregular breathing, I just want you to make a face which is as if you just felt some pain. So you have irregular breathing with that put in. And you were crying. And the moment he got that, you should see how he's crying after that. My God. He used to wait for the crime scenes after that. He's like, Amar uncle, it's a crime scene. ये दिनों आमिर खान को तारे तो इससे पहले कि तुम्हारे करंट में तुम्हें क्या लगता है मैं किसी आईआईटी बॉम्बे आईआईटी कानपुर आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ नहीं मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ आईआईटी अलग सर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में नहीं हुआ तैयारी नहीं की होगी सर आपने की थी नहीं हुआ नहीं था की थी कोशिश नहीं निकली दुख हुआ था बहुत दुख हुआ बहुत कभी परिवार से था ट्यूशन पढ़ा के घर पे पैसे ला बाप के पास नौकरी नहीं माँ घर जाके ट्यूशन पढ़ा रही है मैं घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ एक ही उम्मीद थी कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए तो यार सारी जिंदगी की प्रॉब्लम शायद खत्म हो लेकिन नहीं हुआ किराए के घर पे रहते थे स्लम में एक साल ड्रॉप दे दिया तो नहीं निकला फिर नहीं निकला तुम्हें क्या लगता है मैं किसी आईआईटी बॉम्बे आईआईटी कानपुर आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ नहीं मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ आईआईटी अलग सर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी नहीं तैयारी नहीं की होगी सर आपने की थी नहीं हुआ नहीं था की थी कोशिश नहीं निकली दुख हुआ था बहुत दुख हुआ बहुत कभी परिवार से था ट्यूशन पढ़ा एक बात सुनिए आप तुम क्लास 10th में खोल दो ना तो जो टॉपर बच्चे हैं उनके कान में जाके सब ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा बड़ो मत बोल मैं कोई भाई नहीं दे रहा बोला है टाइम जो मेरा टॉप पे बैठा दिखाई बोल रहे क्या एक्सक्यूज मी ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, ये भी हो गया। अब जो बचा है वो है कोडोमिनेंस।
In codominance, the alleles are able to express themselves independently in F1 generation. Best example of codominance is the ABO blood group in human. ABO blood group is controlled by gene I. The plasma membrane of the RBC has sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene 1. জিওসি আছে 26 তারিখ, মানে ও বাবা দুদিন পরই আছে। Wait a minute. হাসতে হাসতে লাস্টার হাসি ধরে রাখতে পারবে।
হুম, কি হয়েছে? হ্যাঁ, কেন? হ্যাঁ, okay, we will discuss codominance and multiple allele after 5 minutes. Okay.
तितली उड़ न सकी। चलिए, कोडोमिनेंस पढ़ रहे थे हम लोग। In codominance, the alleles are able to express themselves independently in F1 generation. Codominance ABO blood group is controlled by gene I. The plasma membrane of the RBC has sugar polymers antigen that protrude from its surface, and kind of sugar is controlled by the gene I. The gene I has three alleles. Okay. In codominance, the alleles are able to express themselves independently in F1 generation. कोडोमिनेंस में जो एलिल्स है वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पाती है F1 जनरेशन में। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। ABO जो ब्लड ग्रुपिंग है ह्यूमन में वो बेस्ट एग्जांपल है। ABO ब्लड ग्रुपिंग in human is the best example of कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन में एलील्स जो है वो एक्सप्रेस कर पाती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC has sugar polymers antigen that protrudes from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene I. The gene I has three alleles, IA, IB and small I. Each person poses with any three of the I gene alleles. IA and IB are completely dominant over I. So IA और IB जो है वो completely dominant होता है small I के comparison में. The alleles IA and IB are produce a slightly different form of sugar, while allele I does not produce any sugar. When IA and IB present together, they both express their own types of sugar. This is because of the codominance. Hence, red blood cells have both A and B type of sugars. Suppose allele of parent 1 है IA, allele of parent 2 है IA, तो genotype of offspring भी होगा IA, blood type होगा A. सपोज एलील ऑफ पेरेंट 1 है IA, IB और तो ब्लड ऑफ ऑफस्प्रिंग भी होगा AB। तो F1 जनरेशन में कोडोमिनेंस में सारे जो जीन है वो अपना पूरा एक्सप्रेशन कर पा रहे हैं विदाउट ब्लेंडिंग और विदाउट एनी आई मीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई भी रेशियो नहीं है, सब अपना कर पा रहा है। IA एंड स्मॉल आई रिप्रेजेंट IA एंड I, तो उनका ब्लड हो गया A। तो IA और IB है डोमिनेंट। IB और IA में भी जब दोनों साथ में आते हैं तो IA IB तो AB ब्लड ग्रुप ही होता है। IB में तो B ब्लड ग्रुप ही, IB और स्मॉल I में B ब्लड ग्रुप और स्मॉल I में O ब्लड ग्रुप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर पेरेंट 1 में और पेरेंट 2 में IA है तो ऑफस्प्रिंग का जो होगा वो भी IA होगा। अगर पेरेंट 2 में IB, पेरेंट 1 में भी IB, तो दोनों जो ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा वो भी IB। अगर पेरेंट IA और पेरेंट 1 IA और पेरेंट 2 IB, तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो भी IA और IB शो करेगा। अगर पेरेंट 1 IA और पेरेंट 2 है स्मॉल I, तो वो सिर्फ IA और I स्मॉल I शो करेगा, लेकिन डोमिनेंस के वजह से A ही ब्लड ग्रुप होगा उसका। अगर IBI स्मॉल I है तो भी शो करेगा, लेकिन जीनोटाइप कैरेक्टर में फिर भी वो डोमिनेंस के वजह से B होगा उसका ब्लड ग्रुप। अगर I स्मॉल I है तब तो स्मॉल I होगा, और स्मॉल I में कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं रहता, और IA IB आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर। मल्टीपल एलील, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। ठीक है, मल्टीपल एलील अब हम समझेंगे।
existence of more than two alleles of a gene. Existence of more than two alleles of a gene, since in an individual only two alleles can be present, multiple alleles can be found only which population studies are made. Number of possible genotypes n plus 1 divided by 2. Here n equals to number of alleles. So number of possible genotypes क्या होगा? n plus 1 divided by 2. Here n equals to number of alleles. Example, blood group inheritance in human is 3 alleles. Okay, ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए. सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली टू एलिल्स कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल्स कैन बी फाउंड ओनली बाय व्हिच पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड. नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स इक्वल्स टू n plus 1 divided by 2. n equals to number of alleles. Blood group of inheritance in human, blood group inheritance in human has 3 alleles. Okay, तीन एलील है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन में. समझे समझे कि नहीं भोसड़ी के? Back cross. It is a cross of F1 individuals with any of their parents. What is back cross? It is a cross of F1 individuals with any of their parents. ठीक है, अगर कोई जन्म लिया और वो जन्म जो बंदा पैदा हुआ उसी को अगर क्रॉस करा दिया जाए उसका एक पेरेंट के साथ, तो वो होता है बैक क्रॉस. It is a cross of F1 individuals with any of the parent. It is of two types: outcross F1 individual into homozygous dominant parent. Phenotypic ratio all dominant. तो outcross में क्या होता है? F1 individual into homozygous dominant parent. तो phenotypic ratio क्या होता है? ऑल डोमिनेंट. और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1. जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:1. बस इतना ही. टेस्ट क्रॉस F1 इंडिविजुअल इनटू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, और इट इज यूज्ड फॉर द फेनोटाइपिक रेशियो 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और एक है रेसिप्रोकल क्रॉस, अ पेयर ऑफ क्रॉस इन विच मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर रिवर्स्ड. इन मेंडेलियन क्रॉस रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस वेर सेम. इन विच मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर रिवर्स्ड. इन मेंडेलियन क्रॉस रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस वेर सेम. तो ये था पूरा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का टॉपिक. पहले हम पढ़े स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. फेनोटाइपिक रेशियो जिसमें था 3:1. जीनोटाइपिक रेशियो इसमें था जीनोटाइपिक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज रियल टाइप रेशियो, जो कि 1:2:1. फिर हमारा आया लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय
discrete units called factors. और फिर आया characters are controlled by discrete units. ठीक है, characters are controlled by discrete units है. और a dominant allele is a wild type allele or unmodified allele which produce normal enzyme or protein that forms a character. A modified allele is a mutant allele which could be responsible for the production of less efficient enzyme or non-functional enzyme or no enzyme at all. Thus it will be a recessive allele. Law of segregation क्या बोलता है? This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors of alleles of a pre-segregate from each other such that gametes receive only one of the two factors. Thus, gametes are always pure. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of pre-segregate from each other that gamete receives only one. The 3:1 ratio obtained in F2 is mainly due to segregation, although there is role of dominance also. फिर आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोरेल्स कार्ल कोरेंस के वजह से. Incomplete dominance was discovered by Carl Corens 1903 when a cross between two pure breed is done for one contrasting character. The F1 hybrid phenotype does not resemble either of the two parents and was in between the two, called incomplete dominance. Example, if a 4 o'clock plant or a snapdragon plant with a red flower is crossed with a white flower plant, the offspring have pink flowers because some red pigment is produced in F1 intermediate color plant and neither the red or not the dominant or partial dominance. F2 generation phenotypic ratio in incomplete dominance is 1:2:1 instead of 3:1. Genotypic ratio of F2 generation is 1:2:1. Tay-Sachs is an example of result of the incomplete dominance. P-Raya incomplete dominance is also found in color of flower in snapdragon or anthurium or dog flower or feather color in Andalusian fowls. Codominance. In codominance, the alleles are able to express themselves independently in F1 generation. Best example of codominance is the ABO blood grouping in human. ABO blood group is controlled by the gene I. The plasma membrane of the RBC has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by gene 1. The gene I has three alleles, IA, IB, and I. Each person possesses two of the three I alleles. IA and IB are completely dominant over small I. The allele IA and B produce slightly different form of sugar, while allele I does not produce any sugar. While IA and IB present together, they both express their own types of sugar. This is because of the codominance. Hence, red blood cells have both A and B type of sugars. तो इसको कोडोमिनेंस बोला जाता है, जो अपना सारा जो है मतलब एलील का कैरेक्टर वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये टेबल हमने देख लिया. मल्टीपल एलील एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन two alleles of a gene. Since in an individual only two alleles can be present, only alleles are found in three. Number of possible genotypes n plus 1 divided by 2. Blood group of inheritance in human equals to 3 alleles. फिर आया बैक क्रॉस. F1 इंडिविजुअल अगर उसको किसी पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है तो वो बैक क्रॉस होता है. दो तरह के बैक क्रॉस होता है. एक होता है आउट क्रॉस F1 इंडिविजुअल इंटू होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, जो कि फेनोटाइपिक रेशियो ऑल डोमिनेंट होता है और जेनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में F1 इंडिविजुअल इंटू होमोजाइगस रिसेसिव parent और it is used to find out the genotypic of F1 individual. Phenotypic ratio 1:1 for monohybrid cross और genotypic ratio 1:1. Reciprocal में sexes female male and female sexes are reversed in matrilineal cross, result are pair same. तो ये था पूरा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन टॉपिक. आई होप आपको समझ में आ गया.
नेक्स्ट सिंपल लिपिड्स में कौन सी कैटेगरी आती है? फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स बच्चों आपके पास अब है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का टॉपिक। ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कंप्लीट हो गया, अब है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर चलिए करते हैं। आज सोमवार है, इस हफ्ते हमको मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस भी करना है, कल परसों से फिर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ये दो बिग चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अ between the two organisms or species that are different in two pairs of contrasting characters. Dihybrid cross is a cross between two organisms or species that are different in two pairs of, वो था वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में डिफरेंट, यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में डिफरेंट आएगा। Mendel wanted to observe the effect of one pair of heterozygous and other pair, so he selected traits for dihybrid cross for this experiment as follow: color of cotyledons yellow, green, seed shape round, wrinkled. Yellow and round characters are dominant, and green and wrinkled are recessive characters. Okay. All the plants of F1 generation were yellow and round seeds y, small y, r, small r. The factors of both characters will have independently segregate to each other during gamete formation, thus total 4 types of gametes. Okay, yr, small y, bigger, form in F1 generation. Inheritance of two gene follows Mendel's dihybrid cross. Let's break it down. Genes and alleles. Genes are like instruction for traits, example eye color, hair type. Each gene has two versions. Example eye color, hair type. Each gene has two versions, alleles. Each gene has two versions, alleles, one from mother and one from father. Independent assortment: if two traits are controlled by different genes, like seed color and shape in peas, they are inherited independently. Example pea plant, Mendel's experiment: gene 1 seed shape round, gene 2 seed shaped yellow. A plant with R round and wrinkled and yellow and green can pass R or small r and y or small I randomly to its offspring. Yes.
देखिए जीन 1 है, जीन 1 सीड शेप, ठीक है, राउंड और रिंकल्ड। जीन 2 जो लिया गया है वो लिया गया है सीड कलर, जो कि है येलो और ग्रीन, ठीक है। सो अ प्लांट विथ can pass are round or wrinkled and yellow or green randomly to its offspring.
अरे कौन देख रहा है बे? हाँ, तो ये जो दोनों अब ले लिया गया, राउंड रिंकल्ड और येलो और ग्रीन। आप मुझे पढ़ाओ सर। हाँ, सर आप मुझे पढ़ाओ सर। ये जो राउंड और रिंकल ले लिया गया और ये कोई गया येलो कोई और आया, ग्रीन जो ले लिया गया, इस खाली की तो ले ये लिया ऑफ गया। स्प्रिंग में डिव रैंडमली पास होगा। ठीक है, आपको ये जानना है। इन तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होगा। जैसे हो सकता है ये F1 जनरेशन में ऐसा हो, या आपका ऐसा हो, फिर फिर ये मैं भूल आपका गया गाइज। स्मॉल सुनो आदि के खंडाला। सुन, हाँ। ये मेरा बहन है, इसका चैनल का नाम है बोंग स्टडीपेडिया। ये भी अपना चैनल चलाती है, आप इसको मैं सपोर्ट लाइव करें। करती हूँ उसमें, स्टडी विद मी लाइव, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, भैया को भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग कर ही रहे हो। धन्यवाद। इसको ठीक है, ऐसे ऐसे सपोर्ट कीजिए। तो तुझको क्या ऐसे सपोर्ट करे? देख, तुझको क्या ऐसे सपोर्ट करे? इसको सच्ची में सपोर्ट कीजिए, जरूरत है। ऐ ये सब करने का। देख देख, तुझको क्या ऐसे सपोर्ट करे? ऐसा करो साले। কথা বলছি লাইভ না হচ্ছে। Okay, this to this and this. क्या हुआ भाई एलेक्स, कैसे हो? On selfing F1, the resultant F2 generation show the types of plant: yellow round, yellow wrinkled, green round, green wrinkled. ठीक है? The Punnett square given in the diagram can be effectively used to understand the independent segregation of the 2 pairs of genes during meiosis. तो पुन्निट स्क्वायर से हम लोग जानेंगे कि जो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स है इसका क्या निकलता है। तो येलो राउंड निकल सकता है, येलो रिंकल्ड निकल सकता है, ग्रीन राउंड या ग्रीन रिंकल्ड भी निकल सकता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट: when 2 characters dihybrid are combined in a hybrid, segregation of one pair of traits is independent of the other pair of trait. So segregation of one pair of trait is independent of the other pair. The above dihybrid cross between homozygous dominant smooth and yellow seed with homozygous recessive wrinkled and green seed plants prove this law. ठीक है? Law of independent assortment. If a pre-plant has genotype round, wrinkled, yellow, green, it can pass on R or round or wrinkled for shape,
and yellow or green for color. These alleles assort separate randomly and independently during gamete formation, so a parent can produce gametes with any combination. Example, using a dice. Think of a rolling two dice, one for seed shape, one for color. The outcome of one dice not affect the other. Similarly, the inheritance of one gene does not affect the other. Why? It explains genetic variation, why siblings from the same parent can look different from each other. तो यही जो है एक्सप्लेन करता है सिबलिंग जो एक पेरेंट से बनते हैं वो डिफरेंट क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनमें रैंडम वेरिएशन हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे जब जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेते हो तब रैंडम प्रोड्यूस होता है। अगर आप उनका फैमिली हिस्ट्री में देखोगे तो किसी न किसी का लिंक सेम टू सेम दिखता है, तो वो हुआ है ऐसा ही। Imagine you have two different traits like hair color and eye color. The law of independent assortment says that these traits are inherited separately from each other. A deck of cards. Think of hair color gene as one deck. Okay, real life example. अगर dad has a black hair and brown eyes and your mom has blondie hair and blue eyes, when you were born you didn't necessarily get black hair plus brown eyes or blondie hair plus blue eyes. You could have black hair plus blue eyes, blondie hair plus brown eyes. This happens because the genes for hair and eye color separate independently when passed from your parents. Why is this cool? This explains why siblings can have different combination of traits even with the same parent. तो ये होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पिता का ब्लैक हेयर है और ब्राउन आई है और आपका माता का ब्लॉन्डी हेयर है और ब्लू आई है, तो जब आप पैदा होंगे ज़रूरी नहीं है कि आपका पिता के जैसा ही दिखने में हो ब्लैक हेयर और ब्राउन आई। आपका हो सकता है ब्लॉन्डी हेयर हो, मतलब आपने हेयर का जो एलील है वो जीन माँ के से उठाया, ब्लॉन्डी हेयर हो गया, और जो आँख का मतलब आई कलर का जो जीन है वो आप पिता से उठा लिए ब्लैक, तो आप कॉम्बिनेशन से बने। ठीक है, यही होता है। Dihybrid cross, smooth and yellow with homozygous wrinkle are proved by this law of independent assortment. यही कहता है when two characters are combined dihybrid in a segregation of one pair of traits, they independent of other pair of traits. ये independent होता है। Non-allelic interaction or intergenic gene. Difference between monohybrid में, अच्छा मोनोहाइब्रिड में हम क्या लिए थे, इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट, डाइहाइब्रिड में इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट स्टडी किए थे। जीन्स इन्वॉल्व हाइट, टॉल और शॉर्ट। यहाँ पर डाइहाइब्रिड में हम लोग सीड कलर और सीड शेप ले रहे हैं। एग्जाम्पल टॉल और शॉर्ट प्लांट लिए थे मोनोहाइब्रिड में। यहाँ पर हम राउंड रिंकल येलो ग्रीन सीड ले रहे हैं। क्रॉस टाइप जो है वो सिर्फ हम लोग एक कैरेक्टर पर कर रहे थे, तो उसको ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और 9 रेशियो इन F2 जनरेशन जो है 9:3:3:1 हुआ है। तो सिंपल वे में रिमेंबर करेंगे तो मोनो इक्वल्स टू 1 trait, डाई इक्वल्स टू 2 trait. Monohybrid cross looks at how one characteristic is inherited, while a dihybrid cross looks at two characteristics at the same time. दो कैरेक्टर को हम सेम टाइम में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस को लेना जरूरी है, ठीक है। एपिस्टेटिस व्हेन अ जीन प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ another non-allelic interaction or in a test cross phenotypes and genotypes assure same, the Punnett square is used to
We understand the independent segregation of two pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in plant. एपिस्टेसिस में क्या बोलता है? व्हेन अ जीन प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन then it known as epistatic gene, and this phenomenon is known as epistasis. When a gene prevents the expression of another non allelic gene, ठीक है, another non allelic gene जो है, then it is known as epistatic gene. Prevents the expression of another non allelic gene. Dominant epistasis, phenotypic ratio 12 is to 3 is to 1. Example, hair color in dogs, fruit colors in squares. Recessive epistasis, phenotypic ratio 9 is to 3 is to 4. Example, coat color in mice. कॉम्प्लीमेंटरी जीन, ओके, एपिस्टेसिस समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा. व्हाट इज एपिस्टेसिस? व्हाट इज एपिस्टेसिस? एपिस्टेसिस क्या है? एपिस्टेसिस व्हेन वन जीन कंट्रोल्स और हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन. एक जीन है वो कंट्रोल कर रहा है, दूसरे को हाइड कर दे रहा है. इट इज लाइक अ बॉस जीन दैट डिसाइड्स वेदर अनदर जीन कैन शो इट्स ट्रेट और नॉट. सिंपल, डॉग फॉर कलर, जीन 1 बी और बी बाय बी. कलर controls fur color, brown. Gene EE controls whether color is shown. E shows color, small e no color. If the dog has small ee, it does not matter if it has B or big B or small b. The fur will be yellow because the E gene blocks color expression. This is epistasis. ठीक है. तो जीन 1 है, सपोज कलर कंट्रोल्स फॉर कलर, जीन 1, और जीन 2 है कंट्रोल्स वेदर कलर इज शोन और नॉट. ठीक है. अगर जीन में बी, सपोज डॉग का अगर एक बी जीन है, बिग बी जीन और स्मॉल बी. बी क्या होता है? बी ब्लैक कलर शो करेगा, स्मॉल बी शो करेगा ब्राउन कलर. ठीक है. ये है जीन 1, कंट्रोल्स फॉर कलर. अच्छा, जीन 2 है बिग ई बाई स्मॉल ई. बिग ई shows color, small e do not show color. ठीक है. अगर if the dog has small e, then does not matter if that dog has big B or small b, because small e is present, it will show no color. ये इसका मतलब है. ठीक है. टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस. 2 recessive alleles E block another gene. एक दूसरे जीन को ब्लॉक कर दे रहा है. 2 recessive alleles एक दूसरे जीन को ब्लॉक कर दे रहा है, एज इन लैब्राडोर डॉग्स. लैब्राडोर डॉग्स में ऐसा होता है. डोमिनेंट एपिस्टेसिस. 1 dominant allele like W in squares hides the effect of another gene. Duplicate epistasis. 2 genes work together to hide a trait. डुप्लीकेट एपिस्टेसिस में दोनों जीन टुगेदर वर्क करके एक ट्रेट को हाइड करता है. डोमिनेंट में एक एलील करता है, 1 डोमिनेंट. और रिसेसिव एपिस्टेसिस में 2 रिसेसिव एलील्स, 1 डोमिनेंट एलील करता है. रिसेसिव एपिस्टेसिस में 2 रिसेसिव एलील्स अगर प्रेजेंट है तो अनदर जीन को ब्लॉक कर देता है. ठीक है. रिसेसिव एपिस्टेसिस, फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:4. एग्जाम्पल, कलर कोड ऑफ माइस, कोट कलर इन माइस.
phenotypic ratio, hair color in dogs, food colors in squash. Okay, what is the phenotypic ratio of dominant epistasis? Then it will be 2:3:1. What is the phenotypic ratio of recessive epistasis? Then it will be 9:3:4. Example, coat color in mice. Complementary gene phenotypic ratio 9:7. Phenotypic ratio 9:7. Example, flower color in Lathras. Supplementary genes, supplementary phenotypic ratio 9:3:4. Example, coat color in mice. Important formula applicable in selfing only. 2n types of gametes, 3n types of genotypes, 4n total number of possible number of zygote. Here n equals to number of heterozygote condition. तो ये था कुछ ऐसा. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. एपिस्टेसिस. जीन 1 अगर कंट्रोल्स बी और स्मॉल बी कंट्रोल्स फॉर कलर, जीन 2 है कंट्रोल्स वेदर कलर शुड बी शोन और नॉट. तो उसमें क्या है, उसमें ये बोला गया अगर स्मॉल ई प्रेजेंट है रेसेसिव ई तो कलर शो नहीं होगा डॉग में. ठीक है. तो रेसेसिव में क्या होता है, रेसेसिव एपिस्टेसिस में 2 recessive appeals blocks another gene. Dominant epistasis में 1 dominant allele blocks and hides another gene. Hides the effect of another gene. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही था. फिर 2n important formula application applicable in case of selfing only. 2n types of gametes or types of phenotypes, 3n types of genotypes, 4n total possible number of zygote. तो आज 4 टॉपिक तक ही हो पाया. फिर कल के लिए बचा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन हो जाएगा. कल थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक्स, आज बड़ा बड़ा टॉपिक्स हम लोग कवर कर लिए इस 4 घंटे में. थैंक यू and have a nice day. तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ तक अभी जितना भी पढ़ा. Dihybrid cross is a cross between 2 organisms or species that are different in 2 pairs of contrasting characters. Mendel wanted to observe the effect of one pair of heterozygous on the other, so he selected 2 traits: color of cotyledons, yellow and green, seed shape, round and wrinkled. Yellow and round characters are dominant and green and wrinkled are recessive characters. All the plants of F1 generation are yellow and round seed. The factors of both characters will have independent segregated to each other during gamete formation. Thus the 4 types of gametes are these. On selfing, F1 and F2 generation show 4 types of plant: yellow round, yellow wrinkled, green round, green wrinkled. And फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बोलता है कॉम्बाइन इन हाइब्रिड सेक्रेशन ऑफ वन पेयर इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स. तो इसका हमने एग्जांपल ये है कि जो भी ऑफस्प्रिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा वो ऑफस्प्रिंग रैंडमली प्रोड्यूस होगा. ठीक है. इन अ टेस्ट क्रॉस फेनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम. ओके. फिर आया एपिस्टेसिस व्हेन अ जीन प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन इन एन एपिस्टेटिक जीन. ठीक है. जो कि लाइक अ बॉस जीन होता है. डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक जो डोमिनेंट एलील है वो हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर एलील. फेनोटाइपिक रेशियो 12:3:1. रिसेसिव एपिस्टेसिस में फेनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:4. कोट कलर इन माइस होता है. कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो होता है फेनोटाइपिक रेशियो 9:7. एग्जांपल फ्लावर कलर इन लैथरस. ठीक है. सप्लीमेंट्री जीन्स फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:4. एग्जांपल कोट कलर इन माइस. नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड
sex determination, mutation, and then genetic disorders. Okay, so it is the part 1. Part 2 will be completed tomorrow.